In last video we have studied about all the phylums. Now in this video we will study about subphylums. तो अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. So let's start. Here I have differentiated between chordates and non-chordates. So chordates में notochord present होता है but non-chordates में notochord absent होता है. Chordates में central nervous system is dorsal, hollow and single. सो बेसिकली जो कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो वो डोर्सली प्रेजेंट होता है. डोर्सली मतलब कि बैक की तरफ, दैट इज़ अपने बैक की तरफ प्रेजेंट होता है, एंड हॉलो होता है एंड सिंगल होता है. ठीक है. बट ये नॉन कॉर्डेट जो है वो वेंट्रली मतलब कि चेस्ट की तरफ, हार्ट की तरफ प्रेजेंट होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज फेरेनिक्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स. कॉर्डेट्स में फेरेनिक्स जो है वो परफोरेट होता है बाय गिल स्लिट, लेकिन इन नॉन कॉर्डेट्स गिल स्लिट एब्सेंट होते हैं. हार्ट इज वेंट्रल इन कॉर्डेट्स. वेंट्रल मतलब कि चेस्ट की तरफ, दैट इज हार्ट की तरफ अपने. एंड नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट जो है वो डोर्सल की तरफ प्रेजेंट होता है. अगर इन केस प्रेजेंट होता है तो पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, बैक की तरफ. देन a post-anal part, that is tail, is present in chordates, but in non-chordates, post-anal part is absent. So this was basically the differentiation between chordates and non-chordates. Now let's start with subphylum, that is Urochordata or Tunicata, which has notochord only in larval tail, that is Ascidia. Then next is Cephalochordata, where notochord is present from head to tail in all the stages. Example है Branchiostomata. And then finally next आता है Vertebrata, where notochord replaced by vertebral column. Okay? Vertebrata में notochord जो replace हो जाता है by vertebral column. Let's start with Agnatha, which is an organism without jaws. इसकी class है Cyclostomata. So basically Cyclostomata is एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस. इसका मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी फिशेस होती है ये साइक्लोस्टोमेटा जाकर उनके ऊपर अटैच हो जाते हैं, और जब ये बड़ी फिशेस अपना खाना खाती है तो कुछ उनके मुंह से बाहर निकलता है खाना खाते खाते, तो वो खाना जो है वो बैठे बैठे साइक्लोस्टोमेटा को मिल जाता है. इसलिए दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस. दे हैव elongated body, they have 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. तो बेसिकली रेस्पिरेशन के लिए they have gill slit कितने, दैट इज 6 to 15 pairs. दे हैव सकिंग एंड सर्क्यूलर माउथ विदाउट जॉस. सो उनका कैरेक्टर क्या है कि उनके पास एक सकिंग एंड सर्क्यूलर माउथ है लेकिन उनके पास जॉज नहीं है, और उनके बॉडी के ऊपर कोई भी स्केल्स या पेयर फिन्स प्रेजेंट नहीं है. क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस. ओके, तो इनका जो क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम है वो कैसा है, कार्टिलेजिनियस है. दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. Basically they are marine but migrate to fresh water for spawning, that is laying eggs. तो इसका मतलब क्या है, let's see here. जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज दिस साइक्लोस्टोमेटा जो वो मराइन में रहते हैं, लेकिन जब उनको एग्स ले करने होते हैं वो ओशन में नहीं करते. दे हैव टू माइग्रेट इनटू फ्रेश वाटर एंड वहाँ जाकर फिर वो एग्स ले करते हैं. फिर वहाँ जाके क्या होता है कि आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई. तो वहाँ पर एग्स ले करने के बाद कुछ दिनों बाद वो मर जाते हैं, और फाइनली फिर क्या होता है कि जब लार्वीज बड़े हो जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस हो जाते हैं उनका, जब मेटामॉर्फोसिस हो जाता है उसके बाद वो रिटर्न हो जाता है टू द ओशन. सो देयर लार्वी after metamorphosis returns to the ocean. Let's see the examples. Examples are Petromyxone, that is lamprey, and myxine, that is hagfish. The trick is Peter bring magazine. Peter is here, Petromyxone, bring is silent here, and magazine is magazine. Okay, that is hagfish. The next is chondrichthysis. So basically it is marine animal. It is cartilaginous endoskeleton. Mouth is located ventral, that is chest की तरफ जहाँ अपना प्रेजेंट है वैसे उनका भी प्रेजेंट है. नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ. यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट है. गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर्क्यूलम. ओपर्क्यूलम मतलब गिल कवर. सो यहाँ पे गिल स्लिट जो है वो सेपरेट है और इनके पास गिल कवर भी नहीं है. स्किन इज टफ कंटेनिंग माइनर प्लेकॉइड स्केल्स. तो बेसिकली इनकी जो स्किन है वो टफ है, टाइट है,
और प्लस इनकी स्किन के ऊपर माइनर प्लेकॉइड स्केल्स भी प्रेजेंट है। देयर जॉज आर पावरफुल, ठीक है, उनके जॉज जो है वो कैसे पावरफुल है। एंड दीज एनिमल्स आर प्रिडेशियस। प्रिडेशियस मतलब कि चढ़ जाने वाले, बेसिकली चढ़ जाने वाले का मतलब ये कि हंटिंग एंड किलिंग अदर एनिमल्स फॉर फूड, ठीक है। एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर के एब्सेंस की वजह से उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि वो डूब ना जाए। दे हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, one auricle and one ventricle. Then next is some of them have electrical organs. So this is important character जो कि basically बहुत बार नीट में पूछा जाता है कि जो कॉन्ट्रिक्टाइसिस है उनके पास इलेक्ट्रिकल ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या है, टर्पेडो। और उसमें से कुछ जो है वो पॉइजन भी पजेस करते हैं, दैट इज सम पजेस पॉइजन स्ट्रिंग। एग्जाम्पल है ट्राइगॉन। दे आर बेसिकली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, that is poikilothermus. They have internal fertilization and are viviparous. Examples are pristis, that is sawfish, trigon, stingray, carcharodon, that is great white shark, and scoliodon, that is dogfish. The trick is Peter tricar to go to school. So basically Peter is here pristis, sawfish, Tri is here trigon, stingray. Car is here carcharodon, that is great white shark. To go to is silent here, and school is scoliodon, that is dogfish. So next is class Osteichthyes. So basically they are both marine as well as freshwater. Their body is bony endoskeleton and the body is streamlined. Streamlined matlab ki their body is very little resistance to water so that they can increase their speed, ठीक है। they have 4 pairs of gills covered by operculum. तो basically इनके पास 4 pairs of gills present है with operculum. Skin is covered by cycloid or ctenoid scales. Then here air bladder is present. Basically इनको फिर यहाँ पर air bladder present है तो ज़्यादा continuously constantly swim करने की ज़रूरत नहीं है। They have 2 chambered heart, 1 auricle and 1 ventricle. They are cold-blooded, that is poikilothermus, and they are oviparous and shows external fertilization. And the examples are marine, exocoitus, that is flying fish, hippocampus, that is seahorse, then freshwater, that is labo rohu, catla, that is catla, clarias, that is magur, aquarium is betta, that is flying fish, and petrophyllum, that is angelfish. And the trick is for marine is hippo, horse, fly in exomarine. So hippo is basically here hippocampus, horse is seahorse, fly is flying fish, and exo is exocoitus, which are the examples of marine. Then freshwater, then their trick is लैब रोहू में मगर को काट कर रखो. So basically lab is labio, rohu is rohu. May is silent here, magar is magar, that is clarius. Ko is silent here, cat is catla, that is catla. Kar is silent and rakho is also silent here. For aquarium is fight for angel patni. So basically beta is here beta. Fight is for fighting fish. For is silent here, angel is angelfish, and patni is here pterophyllum. ठीक है, so this is a trick. Then next is amphibia. So basically amphibia shows dual life. Amphi means dual and bia means life. So जितने भी organism हैं amphibia के, they shows dual life, both aquatic as well as terrestrial. They have 2 pairs of limb. Body is divided into head, trunk, and tail. May be present in some. So tail may be present in some. Okay. Skin is moist without scales. They have eyes with eyelids. Tympanum is on surface. So tympanum जो है वो surface के ऊपर present है. They don't have external ears. Alimentary canal, urinary tract, and the reproductive tract opens into a common chamber, that is cloaca. Respiration is through gills, lungs, and through skin.
They have three chambered heart, that is two auricle and one ventricle. They are cold-blooded animals. They shows external fertilization and they are oviparous. And the examples are Ichthyophis, that is limbless amphibia, Bufo, that is toad, Rana, that is frog, Hyla, that is tree frog, and Salamander, that is salamander. Okay, and the trick is itching se bura hal Salman ka. So basically, itching is here. Ichthyophis, se is silent here. Bu is for Bufo, Ra is for Rana, Hal is for Hyla, and Salman is for salamander. Okay. And the next is reptilia. So basically reptilia जो है वो creeping and crawling mode of locomotion show करता है, ठीक है. They are terrestrial animals, skin with scales और scutes, ठीक है. तो बेसिकली उनके जो स्किन है वो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं. टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, तो सेम यहाँ पर भी इनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं है. टिम्पैनम जो उनके सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट है. टू पेयर्ड लिम्स, three chambered heart, four in crocodile. So basically they have three chambered heart, two auricle and one ventricle, but in crocodile four chambered heart, ठीक है. Poikilotherm, that is they are cold-blooded animals, internal fertilization and oviparous, ठीक है. So they show internal fertilization and they are oviparous. And the examples are Chelion, that is turtle, Testudo, that is tortoise, Chameleon, that is tree lizard, Calotes, that is garden lizard, Hemidactylus, that is wall lizard, Crocodilus, that is crocodile, Alligator, that is alligator. Poisonous snakes are Naza, that is cobra, Bungarus, that is kite, and Vipera, that is viper. And the trick is चले अली कल टेस्ट है, पढ़ लियो क्रैक करना है. So basically चले is for Chelion, Ali is for alligator, Kal is for calotes, Test is for testudo, He is for hemidactylus, Pad is silent here, Leo is for chameleon, and crack is for crocodilus, ठीक है. After that poisonous snakes तो है बंजा वाइपर. तो बन is for Bungarus, Ja is for Naja, and viper is for vipera. And the next is aves, that is birds. So basically they have presence of feathers to fly except one, that is ostrich. तो उनके पास feathers होते हैं to fly सिर्फ एक के अलावा, that is ostrich. They have beak and modified wings, as we know that उनके पास चोंच होती है और उनकी जो wings है वो modified है. Hind limb adapted to clasping, walking and swimming. तो उनकी जो hind limb है वो adapted है for clasping, walking and swimming. No glands on skin. So basically they don't have any gland on the skin except tail base, ठीक है. Only oil gland at the tail base is present. Endoskeleton is bony. तो उनकी जो endoskeleton कैसी bony है, and the long bones are hollow with air cavities, that is called as pneumatic. So basically जो उनकी long bones है वो hollow है and they have air cavity, that is called as pneumatics. Then next is digestive tract has additional crop and gizzard. तो basically यहाँ पर adaptive additional एक crop और gizzard present है in the digestive system. They have four chambered heart, that is two auricle and two ventricle. They are warm-blooded animals, that is homoeothermous. Respiration is through lungs, and they shows internal fertilization and are oviparous. And the examples are Corvus, that is crow, Columba, that is pigeon, Psittacula is parrot, Struthio is ostrich, Pavo is peacock, Ctenodites, that is penguin, and Norphron, that is vulture. And the trick is सांप कार में पीसी पर बैठा. So here S is Struthio, that is ostrich, A is for Ctenodites, that is penguin, N is for Norphron, that is vulture, and P is for Psittacula, that is parrot. Then next is card, that is basically for Corvus, that is crow. May is silent here. P is for Pavo, that is peacock, and C is for Columba, that is pigeon. पर बैठा is silent. So सांप कार में पीसी पर बैठा. Then the next is mammalia. So they may found in polar ice caps, deserts, mountain, forest, grassland, dark caves, can fly or live in water. ठीक है.
Then next is they have the special character that is mammary glands present for milk production. ठीक है, to nourish the young ones. Two pairs of limb adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming or flying. So their limbs are adapted to so many things. Then skin with hairs, they have the skin with hairs, ears with pinna, so they have the external ears pinna as present. Four chambered heart, that is two auricle and two ventricle. They are homoiothermous, that is they are warm blooded animals. Respiration is by lungs. Sexes are separate and they show viviparous except one, that is ornithohancus, that is platypus. बेसिकली मैमेलिया के एग्जाम्पल्स आर वेरी इजी, तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी याद हो जाएंगे. सो विविपरस आर माइक्रोपस, दैट इज कंगारू. टेरोपस, दैट इज फ्लाइंग फॉक्स. कैमेलम, दैट इज कैमल. मैकाका इज मंकी. ब्रैटस इज रैट. कैनीस इज डॉग. फेलिस इज कैट. एलिफेंट्स, दैट इज एलिफेंट. इक्वस, दैट इज हॉर्स. डेल्फिनस, दैट इज डॉल्फिन. Balaenoptera is blue whale. Panthera tigris is tiger and the Panthera leo is lion. So here we finish animal kingdom. Hope this will be helpful for you all for your need purpose as well as for exam purpose too. And please like the video, comment and also share with your friends. And अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. की चीज़ बोलोगी, खुद पर भरोसा रखो. You can. Thank you.